every 3 women has faced physical and sexual violence. A woman becomes a victim of rape every 16 minutes, and the woman faces an attempt to rape every 2 hours. In a country like India, जहाँ पे 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन दुर्गा, सरस्वती, काली जैसी देवियों की पूजा करती है, पर अगर बात करें इसी देश में वुमेन सेफ्टी एंड जस्टिस के स्टेटस की, तो उसकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है. From taking 8 years to hang the culprits of the infamous 2012 Nirbhaya case to protecting the filthy demons of the recent Hathras gang rape and murder, हमारा judicial system इससे ज़्यादा हमें disappoint क्या करेगा? So when any minister calls or mentions us as daughters of the nation, I think हर किसी का reaction भी मेरी ही तरह होगा. Please. जब भी कुछ ऐसा होता है, every time the internet is filled with anger, fury and resentfulness, and trust me, we can't be more sad and ashamed than this. With a loud and clear social outrage from the youth of the country, जहाँ पे हर कोई उस इंसिडेंट की पोस्ट, पिक्चर्स और स्टोरीज और अपना गुस्सा पोस्ट कर रहा है. I think in the midst of all of this, and I'm talking to every woman watching this video, that it's time for us to take the right action. और अब समय आ गया है कि हमें अपनी सेफ्टी अपने खुद हाथों में लेनी पड़ेगी. And to all the men watching this video, that to all the females you know, make them watch this video or just educate them कि वो कैसे अपनी सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं and खुद empowered feel कर सकते हैं. बिकॉज जब भी कोई नया रेप केस आता है, हम बस इंटरनेट पे एक पोस्ट डाल के अपना एंगर नहीं दिखा सकते हैं और फिर उसके बाद महीनों तक वेट करते रहे कि कोई ना कोई स्टेप लेगा. वी कांट वेट फॉर एनी वन, नाइदर द गवर्नमेंट नॉट द जुडिशियल सिस्टम फॉर एनी वन. सो वी द इंडियन फिलोमैथ अर्जेस एवरी वुमन टू टेक right steps by themselves and to stop feeling that you are unsafe and helpless. So, अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ बहुत ही easy steps and changes जो आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं to feel more safe and secured. As much as Arogya Setu app has become an important must-have during this coronavirus pandemic days in every Indian's mobile app, similarly, Women's Safety app should also become mandatory for every woman of our country, and apps like Smart 24/7, Be Safe, and One by Delhi Police, Himmat, you can download them from Play Store and must have them. Pepper spray, or I should say a red chili spray, is a very powerful and lethal product जो I think that हर किसी women के पर्स में होना ही चाहिए. Well, I started carrying one since I entered college, and let me tell you guys, वो इतना powerful होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी spray अपनी स्किन पे करोगे तो your skin will burn for another 15 to 20 minutes completely. एंड सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर आप उसको किसी की आइस पर स्प्रे करते हैं तो वो एक इंसान को कितनी हद तक बिल्कुल डिसमेंटल कर सकती हैं, एंड इट विल गेट टाइम फॉर यू टू रन अवे फ्रॉम इट. यू कैन ईजिली गेट पेपर स्प्रे फ्रॉम योर नियरेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर और केमिस्ट स्टोर, या फिर आप ऑनलाइन भी जाके इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. Their range is from 200 to 500, but it is the best one-time investment that you can have. And a little safety tip guys, जब भी आप पेपर स्प्रे कैरी करें, always keep it in the outermost pocket of your purse, so that जब भी emergency situation हो तो आप उसको easily निकाल सके, या फिर आप उसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं जब भी आपको danger feel हो. Night travel safety tips. I'll be telling you some 4 to 5 tips that are important. And firstly, number 1, अगर आप रात में किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, always make sure कि आप विंडो सीट पे कभी ना बैठें, क्योंकि विंडो सीट पे ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नंबर 2, कभी भी अपना फ़ोन हाथ में नहीं, हमेशा पॉकेट में रखें, बिकॉज अगर आप पे अटैक होगा तो सामने वाला पर्सन सबसे पहले आपका फ़ोन उठा के फेंकेगा. सो ऑलवेज कीप योर फ़ोन इन पॉकेट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन नाइट. नंबर 3, अगर आप किसी कैब या ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ही आप उसमें बैठो, सबसे पहले अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर को आप कॉल करके गाड़ी का नंबर तेज़ तेज़ से बोल सकते हो एंड बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल, हाँ मम्मी, मैंने आपको ट्रैकिंग जो आईडी है वो भेज दी है एंड आप ट्रैक करते रहना.
राइट। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको किसी गलत रास्ते से लेके जा रहा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो हर लड़की के पास में उसका बैग होता है और आप अपने बैग से, उसके स्ट्रैप से उसका गला पीछे से तेज़ी से खींच सकते हो एंड उसके बाद चिल्ला सकते हो तेज़ी से फॉर हेल्प हेल्प। और हो सकता है क्योंकि वो पर्सन आपको उसी समय वहाँ से उतार दे, क्योंकि कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि वो पकड़ा जाए। एंड नंबर 4, अगर आप किसी अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो, अगर वो कार है तो ऑलवेज़ मेक श्योर कार में बैठने से पहले कि उसकी बैक सीट और डिग्गी पर चेक कर लो दैट इट इज़ सेफ़, एंड फिर उसमें फटाफट से बैठ जाओ एंड नेवर टेक शॉर्टकट्स एंड कभी भी किसी स्ट्रेंजर के लिए रुकना नहीं है। एंड अगर आप किसी स्कूटी से ट्रैवल करो सो ऑलवेज वेयर योर हेलमेट बिकॉज इट कैन बी यूज इन सेल्फ डिफेंस। Number 4. Learn some self-defense. These are the vulnerable and weak areas of the attacker where you can hit him and run easily. You can defend yourself by hitting the attacker from the nib of the pen in the area between the collarbones just below the neck. It is very weak, or you can use your car or scooty keys as well. Place them between your fingers for maximum pressure and hit with full force as I've shown. And you can also press it and check it is the area I'm showing you. When attacked, you can use the side edge of the mobile phone and hit on the weak area of the side face of the attacker where I'm hitting. Or you can just punch him directly on the nose. But don't try to punch too hard as it can break your knuckles. Use your palm instead like this. Whenever wearing heels, you can always thump harder on the attacker's toes, or you can just kick back in between the legs. Every situation is different and we really hope that this helps. Always share your story no matter how bad it is. What I feel is that every girl or woman has faced some sort of uncomfortable situation, and you know what I mean. And कभी कभी तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे लोगों की वजह से आती है जिनको हम, हमारे फ्रेंड्स या फैमिली जान रही होती है, और हम उन लोगों के बारे में किसी को बताते नहीं हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो नोन होते हैं। एंड यही शायद हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये करने से कल्प्रिट को मौका मिल जाता है इस बात का फ़ायदा उठाने का। सो गर्ल्स नेवर डू दैट. ऑलवेज टेल अबाउट इट टू एनी ऑफ योर रिलायबल फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट विद अ सोल्यूशन. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आपके साथ कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता है तो ट्राई टू लिसन टू देम एंड हेल्प देम टेक इट आउट ऑफ इट रादर देन ब्लेमिंग देम. So, this is something we really want to address. No, it is not related to women's safety directly, but we believe that it somehow correlates. As you all know that today body shaming is a very common topic, and we have seen people while sitting with their friends in a group, it is very easy to make a remark on a girl's or even a guy's body, and just because friends hote to we used to enjoy it and take it in a light manner. But I want to tell you guys, if you ever notice that your friends are doing such things, then it is our duty to stop them right there. Because this isn't right and it is very toxic, and we should be the one to educate them because we are their friends, right? And I've also seen girls protecting their guy friends even when they have done something horrible just because they are friends. And finally, I want to say that women's safety starts from us and around us. So it's time for us to educate people. Do follow these simple steps as we believe that we can become our own heroes. So this is all from the Indian Philomath guys. Don't forget to like this video. And अगर आपको कुछ और safety hacks पता है तो हमारे साथ comments में share करना ना भूलें. And subscribe the channel if you haven't. And share this video to all your friends and families in order to educate them. Because it's time for our own actions. Thank you.